He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha, and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him, and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं ब्रह्मास्मि। Good evening, everyone. Welcome to the Q&A session for this day. And good to see that people are doing the practices and sharing the photos as well. So that looks really magical, and you must have started seeing changes in you as well. अपने अंदर बदलाव तो दिखने लगेंगे. And slowly as the days advance, like it will change. Like it feels like as if it goes from the no moon day to the full moon day. That should be the transition, and some people will look at themselves and they will feel blush. Oh my God, is this me? And that should happen. And that's how it is. And that's how we should have the photographs to compare, so that we have been asking you to send the photographs. Good. And in that way, at least to come on the camera, you should look good, right? People don't want to look good for gods, at least not even for themselves, at least for the camera they will. So whichever way works for you, it's good. In whichever way you are looking good, that's good. जिस तरीके से भी हो, साम दाम दंड भेद, जिस तरीके से भी हो. So good to see all of you practicing it diligently, because I'll be talking a little bit about that also in some time. चलिए, तो आज का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं. आभा जी, प्लीज अनम्यूट. लेट मी सी. या, प्रणाम गुरु जी. प्रणाम आभा जी. गुरु जी, एक छोटा सा डाउट है. हाँ जी. कि
शिव की पूजा कर रहा है, यदि कोई बंदा शिव की पूजा, शिव की भक्ति में लीन है, ओके और वो पहले से ही विष्णु भक्त है ओके। ना, हाँ जी। तो एक स्टेज पे आने के बाद सिचुएशन ये हो जाती है, क्योंकि वो इतना मेच्योर नहीं है अभी दिमाग से कि दोनों को एक रूप में जान ले। ओके ठीक है, एक रूप में जान ले दोनों को, इतना मेच्योर नहीं है वो। ओके। तो उस सिचुएशन में जब वो शिव का नाम ले रहा है, तो ध्यान और नाम और वो सब वही आ रहा है जिसका वो पहले भक्त रहा है। फिर हम्म। इस पथ में जाने के बाद ये जब स्थिति आती है ना कि एक भाव कैसे आए, मतलब मेरा क्वेश्चन मैन ये है कि ओके हम दोनों को एक मान के कैसे आगे बढ़े। ओके। चलो, भले ही एक मानो या दो मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शुरुआत तो कर रहे हो। तो अभी मैं बताता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम होता है। जैसे ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते बोलते ही वासुदेवाय आ जाता है। आ जाता है। क्योंकि हम शुरुआत से जो वैष्णव मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये हम बोलते जा रहे हैं क्या। यहीं पे जब नाम बदल जाता है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, अरे अरे यहाँ पे वासुदेव नहीं है, यहाँ पे स्वर्ण आकर्षण भैरवाय है। यहाँ पे कुछ लोगों को तकलीफ होती है जब शुरुआत होती है, क्योंकि क्योंकि जीवन भर हम वासुदेव के साथ वही जोड़ते आए हुए। अब क्या होता है जब ये जाप करना शुरू करते तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इसी में तो उत्तर है आपके सवाल का। हम इसीलिए उस मंत्र में जानबूझ के वासुदेव से पहले जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसमें है ओम नमो भगवते। मतलब यहाँ पे मैं भगवत स्वरूप जो विष्णु है उसको भी ध्यान कर रहा हूं, और स्वर्णाकर्षण स्वरूप जो शिव है उसको भी ध्यान कर रहा हूं। इसलिए वो मंत्र में ये जुड़ा हुआ मंत्र है। क्योंकि आप अगर स्वर्णाकर्षण भैरव को देखोगे, वो ना शिव जैसा दिखता है ना ही नारायण जैसा, वो दोनों जैसा दिखता है। बिल्कुल इट बिल्कुल। लुक्स लाइक बोथ। इसीलिए वो मंत्र में ही उसका उत्तर छिपा हुआ है। आप उसे किसी भी रूप में देख के पूजा करो ना, आपको बिल्कुल वही उपाय मतलब वही फल मिलने वाले हैं। वो चाहे आप नारायण समझ के उसकी पूजा करो या शिव। एक्चुअली जैसे गुरुजी कोई मंत्र हम जाप कर रहे हैं, है ना, हाँ जी हाँ जी अब चूंकि अभी तो आपका बताया हुआ हमने जाप शुरू किया, हाँ जब जी। हम थोड़ी सी गहराई में गए तो वो मंत्र कब उस भाव में आ जाता है, कब वो चेंज हो जाता है जिसका हम जाप करते हैं, हाँ फिर क्या अब सिचुएशन आती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब ये समझने वाली बात है। साधना किसे कहते हैं जानते हो? साधना उसे नहीं कहते कि मंत्र अपने आप चल रहा है, जो उसे हम एक तरीके से जानते हैं उसे हम लोग अजाप अजाप कहते हैं। लेकिन कई सारे लोग जो उस मंत्र में प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं, मतलब उस मंत्र के बारे में जानते नहीं, बस जैसे कोई भी गाना आप सुनते हो है, और गाना सुनने के बाद वो गाना आपके अंदर बजने लगता है। इट कीप्स ऑन रिंगिंग। आप सुबह उठो वही गाना बज रहा है, सोने जाओ वही गाना बज रहा है, रात में अचानक से उठो वो तब भी वो गाना बज रहा है। क्या आप उससे भी अजाप अजाप कहोगे? वो अजाप अजाप नहीं होता है। वो क्या हो गया है, एक गाना इतना मतलब हिट कर जाता है या तो क्लोज आ जाता है आपके कि वो बजने लगता है कानों में। लेकिन ध्यान और इसमें क्या डिफरेंस है इसको समझ लो। जब भी हम कोई मंत्र जाप की सिद्धि लेते हैं, सिद्धि करने से पहले उसका सबसे एक जो गहरी चीज उसके पीछे लगनी पड़ती है कि मेरा संपूर्ण ध्यान उस मंत्र के ऊपर रहेगा। अवेयरनेस जिसे कहते हो आप। तो वो जब अवेयरनेस रहेगा तब आप जब एक एक मंत्र का जाप करोगे, आपको अभी देखो जो गलती हो रही है ना उसके वजह से आप अवेयर हो जाओगे कि अरे रे रे मैं मंत्र यहाँ पे गलत कर रही हूँ। दैट मीन्स समवेयर आई एम लूजिंग द कंसंट्रेशन वेयर द मंत्र इज चेंजिंग। मेरा मंत्र बदल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे और भी दृढ़ता से आपका ध्यान रखना पड़ेगा। अब माला ऐसे ऐसे नहीं चलेगी जैसे कृष्ण 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 राधे 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 शिव 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 शिव, वो नहीं चलेगा। क्योंकि वो अंतरात्मा में उतर चुका है। वो मंत्र और मंत्र नहीं रहा, वो बस एक जाप बन चुका है मेरे जीवन का। लेकिन जब हम ये नए सिद्धियों के लिए लेते हैं मंत्र, उस समय संपूर्ण कंसंट्रेशन के साथ। आप सोचो कोई व्यक्ति लेट से राधा का नाम लेता है जीवन भर, मतलब
दिन भर राधे 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 बोलते जा रहा है। इस व्यक्ति में, और जो व्यक्ति एक ही बार नाम लेता है राधे और गया, मतलब शून्यता को छू लेता है, किसका बेटर है? जो दिन भर राधे 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 बोला और उसने एक ही बार राधे कहा और उसमें मिल गया, मतलब वो भाव विभोर हो जाता है वो शब्द में, उसके मुंह से और शब्द नहीं निकलते, उसका हेतु नहीं रहता। कौन एक बेटर साधक है बताओ? क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति एक, ओके बहुत सुंदर घटना याद आई, बता दूं, एक कहानी के माध्यम से बता दूं। ओके, एक बार ऐसे होता है, गुरु गोविंद सिंह जी, सॉरी गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी एक बार कहीं ट्रैवल कर रहे थे, मतलब कहीं गए हुए थे, उस समय की बात है, और वहां पे एक मस्जिद था, ठीक है। तो मस्जिद के सामने जो मौलवी थे, जो वहां के जो थे, वो कहते हैं कि आप तो कहते हो कि ईश्वर सब में है, तो आके हमारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो ये गए और जाके अंदर बैठ गए, और ये लोग नमाज अदा करने लगे। 10 मिनट 15 मिनट जो भी चला, ये वैसे ही बैठे रहे, ये कुछ नहीं किए, वो जैसे करते रहे, ये बस देखते रहे, उनको कुछ नहीं किए ये। उसके बाद जैसे ही समाप्त हुआ तो मौलवी उठ के आते हैं और कहते हैं आपने तो नमाज अदा ही नहीं की, आपने नमाज पढ़ा ही नहीं। तो इन्होंने कहा पढ़ा तो हमने नहीं और पढ़ा आपने भी नहीं, मैंने नमाज नहीं पढ़ा ये दिखाई दिया, लेकिन नमाज तो आपने भी नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कैसे? बोला पूरा ध्यान तो तुम्हारा मेरे ऊपर था कि मैं पढ़ रहा हूं कि नहीं, तुम कब नमाज पढ़े? उसी भांति मैं कहता हूं आभाजी, जब भी आप जाप कर रहे हो, वो मैं खाली अगर जाप करता रहा, लेकिन मेरे मन के अंदर कई विचार आ रहे जा रहे उस जाप के दौरान, क्या असर करेगा उस जाप को? इसीलिए अगर मैं पूरे संपूर्ण ध्यान के साथ, इफ आई पुटिंग एंटायर फोकस ऑन दैट एंड डूइंग, मैं वो कहता हूं 1 मिनट आधा सेकंड भी अगर उसके साथ जुड़ के ध्यान करते ना, वो काफी होता है। मैं दिन भर राम 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 बोल रहा हूं, जैसे हमारे अगरबत्ती के ऊपर राम की छवि, आज मंदिर में पूजा हो रहा है, दूसरे दिन में रोड पे पड़ी हुई है, उसी के ऊपर लोग पैर डाल के चल रहे हो, कहां गया हमारा राम? तो उसी बात ही, ऐसा मत करो आपके जाप को कि कोई भी उसके ऊपर चढ़ के चला जाए, आपका दिमाग उसके ऊपर चढ़ के चला जाए, आपकी बुद्धि उसके परे चले जाए। एक एक क्षण में, एवरी मोमेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ योर मंत्र। तब क्या होता है, मंत्र का जो उच्चारण है वो भी सुधर जाएगा आपका, और उच्चारण सुधरने के साथ उसका फल जो देने का जो मार्ग है, वो उस भांति आपको फल देगा। फॉर एग्जाम्पल इतना ही है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जितना डालना चाहिए, मैं अगर ऐसे आंख बंद करके डाल दूं, आप मास्टर हो सकते हो, आप बिना देखे डाल दोगे परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो मास्टर नहीं है वो गिन चुन के नाप तोल के डालता है ना। तो जब आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हो तो उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इसी समय जब आप मंत्र करते हो, तो जब मंत्र बदलता है रुको, फिर देखो कि मंत्र बदला है, स्टार्ट अगेन दैट। उसी माला को शुरुआत से करने की जरूरत नहीं है, उसी जगह पे फिर से उस माले का जो आपने अगर फेर लिया था वहीं रुक जाओ, फिर से जाप करो, फिर फेरो। तब क्या होगा, संपूर्ण कंसंट्रेशन भी आएगा इस चीज के ऊपर। और एक एक आदमी, अगर उसको ये कहा जाए कि तू गड्ढा खोद के पानी निकाल, ठीक है, और वो क्या करता है, यहाँ पे 4 फीट खोदता है, वहां पे 6 फीट खोदता है, वहां पे 15 फीट खोदता है, कुआं का पानी कभी मिलेगा उसे? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो हमारा मन भी ऐसा ही करता है, जब हम जाप करने बैठते हैं ना, थोड़ा देर के लिए लग जाता है, फिर थोड़ी देर उधर चला जाता है, फिर थोड़ी देर उधर चला जाता है, लेकिन जाप चल रहा है। नहीं नहीं, जाप तो चल रहा है, लेकिन मन उसके साथ मन नहीं है। जुड़ा हुआ है क्या? मंत्र का मतलब क्या होता है, मन त्रयते मंत्र, मतलब मन के परे जो लेके चला जाए वो मंत्र है। लेकिन अगर मन मंत्र को लेके चला जाता है तो वो मंत्र कारगर नहीं हुआ, क्योंकि मंत्र हैज बीन हाईजैक्ड बाय द माइंड। नहीं, मंत्र ऐसा होना चाहिए दैट द माइंड इज हाईजैक्ड बाय द मंत्र, द माइंड इज नोवेयर अवेलेबल, उसकी सत्ता ही ना रहे उस जगह पे। और ये होगा क्योंकि हमें एक हैबिट है, उस हैबिट को चेंज करना वहीं पे कार्यरत होता है। लेकिन अब देखिए, अगर आप उसको ध्यान से करोगे बिल्कुल सटीक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैसे भी
अंत में कैसे भी क्षमा प्राप्त करते हो हर कोई। दैट इज समथिंग दैट इज सो अमेजिंग अबाउट आवर कल्चर, कि भाई गलती हो गई तो भी हाथ जोड़ लो, भाई मान लो गलती हुई है। और वो वैसा नहीं है कि ग्रज रखने वाला या फिर आपको आके बाद में परेशान करेगा, वो ऐसा भगवान को हम नहीं जानते। अच्छा गुरु जी, एक सिचुएशन और बताइए हाँ जी। कि आ, जाप करते करते ऐसे होता है ना, कभी बहुत डीप में चला गया कोई बंदा, हाँ जी। ठीक है, और डीप में जाने के बाद उसको, डीप में जाने का क्या मतलब है कि उसको अपना कुछ, अपनी स्थिति का भान नहीं रहा, बिल्कुल। है ना। और उसके बाद जब वो पूर्ण चैतन्य होता है, पुनः चैतन्य होता है, तो उसके मन में जिस मंत्र से गया था वो ना चल के जो, दूसरा कुछ चल रहा फिर क्या है। होता है, मुख से वही निकल रहा है, फिर वो क्या अच्छा, होता है, वो क्या चीज है, चलो वो कौन सी आभाजी, चीज बहुत होती है? बहुत बढ़िया सवाल। अच्छा, ये प्रॉब्लम कितने लोगों के साथ है? खाली ऐसे ही या तो यस टाइप करो या तो कुछ तो भी टाइप कर दो, मुझे समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोगों की बीमारी है। दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम विथ यू आभाजी। मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब इसको मानेंगे कि जब मैं मंत्र शुरू करता हूं मंत्र तो चलता है, पता नहीं बीच में कहीं गायब हो गया, और जब मैं जागता हूं मंत्र कुछ अलग चल रहा है, अब उस मंत्र को फिर से शुरू करूं या हाउ इज इट? एग्जैक्टली, यही 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 बस। अभी मैं जो उत्तर देने वाला हूं इसको लेके कोई भी उत्तर तो मैं दे दूंगा इसका, लेकिन इसको लेके डोंट मेक ए एक्सक्यूज आउट ऑफ इट। इतना अगर आप अपने तरफ से कहोगे तो मैं अपना आंसर बताऊंगा। एक्सक्यूज नहीं बनाना है मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, बिकॉज दिस इज द फैक्ट ऑफ इट। क्या फैक्ट है? आपने योग निद्रा सुना है? योग निद्रा बैठ के नहीं की जाती, योग निद्रा मंत्र करने के समय पे आती है। योग निद्रा किया नहीं जाता, योग निद्रा हो जाती है, क्योंकि आप जो प्रयोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? योग। प्रयोग। प्रयोग का क्या मतलब है? उस योग तक पहुंचने का प्रयत्न, वो प्रयोग कहा जाता है। उस योग मतलब वो जोड़ने का, मतलब आत्मा से परमात्मा का जोड़ने का जो प्रयोग आप मंत्र द्वारा कर रहे थे, तब वो प्र जो है वो प्रयत्न हो गया, योग जो है वो जुड़ना हो गया। ये प्रयत्न करते 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 कब आप उसके साथ जुड़ गए वो आपको ध्यान नहीं रहता, और आप उसमें विलीन हो जाते हो, उस चीज को योग निद्रा कहते हैं। अब कल से लोग क्या करेंगे? बेड पे सो जाएंगे, बोले यही योग निद्रा है। मैंने इसीलिए पहले ही कहा है, योग निद्रा वो नहीं है, इट शुड नॉट बिकम ए एक्सक्यूज फॉर यू। लेकिन जब आप कभी भी देखना आभाजी, जब आप गहरे सच में आप उस मंत्र के साथ जुड़े हुए हो और जब मंत्र चलता है, तब आपको पता भी नहीं चलता कब आपके हाथ से माला छूट जाती है और आपका मंत्र बदल जाता है। यहाँ पे कई सारे लोगों को परेशानी ये होती है, ये पूछते कि मैं कहीं सो तो नहीं गया। अगर ऐसी परिस्थिति है, इफ दैट इज द केस, उसमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू? देखो, कभी आप सुबह सुबह उठ गए और आपको लग रहा है कि आंखें जल रही है, नींद आ रहा है, ये तो योग निद्रा नहीं है। वो आपको पता चल जाता है कि शायद कल रात देर तक जागा, या तो कल देर बहुत ज्यादा थक गया था, अभी तक नींद पूरी नहीं हुई मेरी। उसमें अगर आप बैठोगे तो आपको पता है कि नींद आने के लक्षण क्या है, वो आपको पता है। उवासी आने लगेगा। अच्छा, एक बात बताओ, जब भी आप मंत्र जाप करते हुए आपको उवासी आई क्या? डिड यू नहीं। टॉक लाइक काइंड ऑफ देन यू वेंट टू स्लीप? नहीं। नींद आने के कुछ लक्षण है, जैसे बारिश होने से पहले कुछ लक्षण है कि बादल आएंगे, अंधेरा होगा, हवा चलेगी, बिजली कड़कड़ाएगी। सो दीज आर ऑल द इंडिकेशंस दैट इट्स गोइंग टू रेन। इंडिकेशंस ऑफ स्लीप को समझो। व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ स्लीप? इंडिकेशन ऑफ स्लीप आर लाइक, फर्स्ट, हाँ, जमाइयाँ शुरू हो जाती हैं, उबासी आने लगती हैं। सेकेंड आप बोलोगे, फिर आप सर्दी जाता है, फिर धीरे धीरे ऐसे सर नीचे जाता है। होता ही नहीं होता, देखो आप अपने नींद को, अगर आप बैठे हो तो धीरे धीरे आप ऐसे करते करते, और सबसे बढ़िया, अक्सर आप देखना आपका सर इस तरफ झुक जाएगा, टुवर्ड्स द राइट साइड। क्यों? क्योंकि चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी। चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी तो मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो गया तो नींद आ जाएगी। समझ रहे? पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो, दैट्स अ एंटायर वे ऑफ इट। तो जब आप को अगर सुबह उठे और नींद आ रही है,
तब बिल्कुल मंत्र जाप मत करो, सो जाओ 15 मिनट। लोग बोले 15 मिनट के नाम पे कभी 2 घंटे हो जाते हैं, तो आपकी किस्मत। लेकिन अगर आपने वो 15 मिनट आप सो गए ना, उसके उठने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, आपका जाप बिल्कुल सही चलेगा। और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि वो ऐसी स्थिति बनती है उसमें कि जब मन को मनत्रयते, मन से परे चला गया वो, मतलब जाप तो चल रहा था, मैंने अपना पूरा जितना ध्यान लगाना था, आई कंसंट्रेटेड सो मच इनटू द फायर दैट आई बिकेम द फायर। मेरा ध्यान इतना उसमें लीन हो गया। जैसे मीरा का एग्जाम्पल ले लो, वो जब कृष्ण के सामने जाके खड़ी हुई, सब कहते हैं ना सब सब मीन्स बॉडी के साथ वो कृष्ण में विलीन हो गई ना। क्या हुआ, उसका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा था कि वो उसमें विलीन हो गई। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये करके नींद आती है मंत्र के समय, तो वो नींद है, पक्का नींद आई आपको। यू स्लेप्ट ऑफ, यू डोज्ड ऑफ, यू आर डे ड्रीमिंग। लेकिन अगर संपूर्ण जैसे बैठे हो और ये चल रहा है और अचानक हाथ से माला गिरा और आपको हेतु नहीं है, यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ एनीथिंग हैपनिंग अराउंड यू, व्हाट डज दैट मीन? उसे योग निद्रा कहते हैं। मीन्स यू एब्सोल्युटली फ्रीड योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली अटायर्स, सांसारिक चीजों से परे चले गए। What did you do in that moment? You were absolutely connected. अच्छा, उस चीज में जो समय जो बात करते हैं, उस चीज में आप देखना ना, आप दुखी थे ना सुखी थे ना ड्रीम देख रहे थे ना कुछ हो रहा था उसका। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है आप सो गए थे, तो सो के क्या कर रहे थे? What were you doing in that sleep? You will say nothing. लेकिन अगर नींद आ गई है तो कुछ ना कुछ स्टोरी बोलोगे आप मुझे। अच्छा, मैंने ना नींद में जाके देखा, कुछ आया कुछ गया, ये देखा वो देखा, स्वप्न। लेकिन हमने इसका भेद भी किया है लास्ट टाइम में कि कभी कभी ध्यान के समय में भी ऐसा होता है, लेकिन अगर उसमें कोई देवी या देवता दिखाई दे और वो आपको कुछ दे रहा है, 100% लिख के रख लो, वो सपना नहीं है, वो सपना नहीं है। सपना होता तो लोग लेने आते हैं। कभी सपने में कोई किसी कुछ देते हुए देखा है आपने? सपने में सब लेने ही आ जाते हैं, बिकॉज माइंड ओनली अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, उसके परे नहीं। लेकिन अगर उस तरीके से आता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो अब समझ में आया नींद आती है या ध्यान हो गया? क्लियर है ये बात? हाँ। तो अब जाके बैठो और जब माला जाप करते हो तब देखेंगे। तो गुरुजी, माना किसको जाएगा, इतना और बताइए। वेरी गुड। मंत्र जाप का कारण क्या है? हम्म व्हाई आर यू डूइंग इट? आप ध्यान क्यों करते हो? ध्यान करने का कारण क्या कुछ प्राप्त करना है या उसको प्राप्त करना है? तो सबका कारण एक ही है, उसको हाँ, प्राप्त करना। तो नहीं, सबका कारण एक नहीं है। कुछ लोग उससे प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे तो हर काम का कारण वही है कि उसको प्राप्त करना। मैं अपनी बात कर रही हूँ। जो शब्दावली है वो समझ में आ गया ना? कुछ जी लोग बिल्कुल। उससे कुछ चाहते हैं और कुछ लोग उसे चाहते हैं। सम पीपल वांट समथिंग फ्रॉम हिम, सम पीपल वांट हिम, नॉट समथिंग। सो यहां पे जो चीज को हम समझ रहे हैं ना आभाजी, जो उसको अंतिम चरण में अगर वो वही उसकी इच्छा है, मतलब आई डोंट हैव एनी अदर डिजायर एक्सेप्ट दैट वन थिंग, और उसमें अगर विलीन हो जाता है कुछ समय के लिए, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? मैं तो कहता हूं मंत्र फलित हो गया। नथिंग बेटर देन दैट। और बिल्कुल सीधा सरल है, ऐसे में कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं। लेकिन जो इसको नहीं समझा है उसको कॉम्प्लिकेट करके समझाएगा आप, लेकिन इतना सिंपल है ये। और मुझे लगता है कि आपको जिस तरीके से मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी आई। बिल्कुल। चलो, और कुछ आभाजी? नहीं गुरुजी, अब बहुत टाइम हो जाएगा अभी, और भी हाथ उठे हुए हैं। चलो, धन्यवाद। अगले हफ्ते, अगले हफ्ते बिल्कुल तक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है धन्यवाद। गुरुजी, थैंक यू लेकिन थैंक यू।
धन्यवाद, आपके वजह से कुछ लोग लेजी हो जाएंगे और कुछ लोगों को क्लैरिटी आ गई। ठीक है गुरु जी, मुझे तो समझ में आ गया अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। थैंक यू धन्यवाद। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। चिदविलास। Namaskaram, Guruji. नमस्कार। So, I actually had doubt about like mudras, how do mudras work and what is वो the mechanism of it. कमलेंदर जी का लॉन्ग टर्म इशू चल रहा है अभी भी, कमलेंदर जी भी हंस रहे हैं। ये मुद्रा विज्ञान के बारे में कब बात होगी? ओके ठीक है। Acha, it's there in a list. इट इज देयर इन द लिस्ट, मुद्रा विज्ञान लिस्ट में है, इष्ट देवी देवता लिस्ट में है। अभी बहुत लंबा लिस्ट है एक्चुअली, और कुछ लोग तो पूरा लिख के रखे लिस्ट में और क्या क्या है। Acha. बोले 2 साल पहले आपने कहा था ये बताएंगे, अभी तक नहीं। मैं बोला जो बताता हूं उसी को आप पहले ग्रहण कर लो। कोई बात नहीं चिदविलास, मुद्रा के बारे में हाँ पूछ लो, कुछ तो अभी बता ही सकते। हाँ देखो, Like, राधा तंत्र। ओके। just a minute, Guruji. या चुपा चिप्स खा लो पहले तो। हाँ जस्ट अ सेकेंड। हाँ Sorry, Guruji. So, नहीं कोई नहीं। so like, I just wanted like how it works in the physical thing. In energy level, so many things can happen, but how in a physical realm? Absolutely. See, as I said, every geometrical structure radiates a particular kind of energy through the angles that it creates. Right? जैसे आपके घर में देखो, like if a fan is moving, okay, it is rotating in a circular movement and it has a typical kind of sound that you can absolutely hear that. Okay. And now just like your little sister is running around and talking to you, she makes another kind of sound. No, Chidvilas, you should not get angry on your little sister, you know. That's what is we call as patience. Okay. Yes, Guruji. Okay. So a particular angle generates a particular kind of frequency. For example, you play musical instruments, right? Yeah. So what all instruments do you play? Like maybe piano, and then sometimes I randomly play tabla, veena. Okay. limbo. So what is left out then? Sometimes I play tabla, sometimes veena, sometimes guitar, sometimes this. तो बचा क्या है? अच्छा सब बजा लेते हो, ठीक है चलो कोई बात नहीं। So in tabla there are two ones, right? One is the small one and the bigger one. Do they both sound similar in sound when you are beating it? Is it making the same sound? No, No. Why? like the volumes are different for both of them. Why? Can you see there is a structural difference in it? Yeah. The very basic answer. There is a structural difference. Because of the structural difference, there is a music that is coming out in a different fashion. Let's say I change that, I move that small little one and put the same bigger one on right side and left side. Then There will be no difference. why? Structural. Then let's go to your piano that you are playing. But when I am looking at the piano, what is happening is I can see all the keys are similar, only white and black keys. Then how are they making noise in a different way? Go back into the mechanism. You will see some are lengthy ones, some are short ones, some are mid-side ones, and some are bent, some are flattened. That's how different music comes out of it. Right? Let's say you are playing veena. It is one instrument, but how is that one instrument making all changes? Because of the length of the wires that you are putting into play and with what chord you are touching it. क्या हो गया? उसका जो angular difference था वो different हो जाता है. There is a structural change. Let's say you are holding at the first chord of it and you are just pressing it. You see the distance and the structural thing that it will create.
comparing to the last chord that you are holding? Is there a change in the frequency? That's Yeah. how music is changing. Why did the frequency change? Because the object, the thing that you created, its structural is changed. The structure is changed. That's how the music is also changing. Why I took example of the musical ones is because it is very easy to understand how a slight change changes all the things about it. Let's say you are starting to play the tabla, then you take a hammer and set that. What are you exactly doing? Like You are setting it together. changing the structural thing in that, and the frequency of the music is changing. Similarly, हम जो हस्त मुद्रा करते हैं या शरीर की मुद्राएं करते हैं या तो पैरों की भी जो मुद्राएं हैं वो जब करते हैं, everything what you are doing is you are changing certain things about it. Your body was reacting in a, let's say this is now a musical instrument. I am touching my hand just like this and I am doing something. It has one kind of frequency. And now I change the frequency into this. And I just did like this. What is the problem? But something structural has been changed. So you understand when the structural change is happening in the instrument, it is changing the frequency of the instrument. When the frequency of the instrument is changing, it is creating different kind of sounds or receiving pattern. So when we do any kind of mudra, either we do it to receive something or to give away something. Means some mudras help us cleanse our body so that the energy that is not needed goes out. Some mudra are done so that that energy that is available in that place, we can bring it back to our space. For example, आप जब मंदिर जाते हो, when you go to the temple, what do you do? The first thing, the easiest thing that everybody does. What do you do? What does that mean? Making Do you know why you do this? Have you ever thought why you do this? I'll tell you a very simple thing about that. If you see, the cosmic energy flows from the top of the head, that is Brahmarandra mein aata hai, and it travels through the body and it is only going out through the hands and the feet. Aap bologe, what is the scientific proof of that? That the energy is traveling through this and it is getting out through that. Okay, तो उसको मैं scientifically prove कर देता हूँ. See, both of these, your hands and feet, even you go and study anatomy and physiology of the body, you will come to realize these have the maximum number of nerve endings. When there are the maximum number of nerve endings, these are very, very sensitive parts. You just put something, you will know, like, are hard hai, soft hai. You don't go and put your hand and say, ye soft hai nahi hai. No, you just put your hand like this and say, oh, this is soft, this is hot, this is cold. How do you do that? True, the nerve endings are very, very active here in your feet and your hands. That's why are they so sensitive? Because they are always communicating. What is the reason here? They are communicating. How do you communicate through a phone? Wireless. How do you communicate with a matchbox to matchbox? Have you ever played that? Or a box to box with a string in that? That is also called something as there is a thread through which the voice is passing. It's magical, right? How can a voice pass through that single thread? Can science deny that? No. Science cannot deny that. The reason is because these two objects are connected through that thread, and that thread is becoming the medium through which the voice is getting transmitted from one end to the other end. Scientific? How do I know this thing is hot or cold? Are you getting that? Similarly, when this thing is going and an exchange of energy is happening, there is a particular kind of energy in my hand. When I touch that, if it is more than the temperature of my hand, I will feel hot. If it is less than my hand, I will feel cold. Yes or yes? Can science deny this? No. That means the nerve endings are continuously getting connected with the other thing. They are talking to each other. The only thing is the relay is happening in your head.
Got it? So similarly, that means things are going out through these. The nerve endings are sending signals, just like the bats. The bats cannot see in the night, but we all know they create something called as a frequency, ultraviolet frequency, ultrasensory frequency that they throw out. And if there is an object, they will know that will return back and they will move out. Got it? Similarly, our nerve endings are the places through which the energies are flowing out. Now, when I am in a temple, what I am doing is I'm closing my hands. What does that mean? That means when this energy is flowing into my body, I am not letting it go out. I am creating a connection between my both hands so that the energy that is coming flows in the body and it creates a good circuit. And that energy that I am getting in that temple should be absorbed in the body itself. समझ में आ रहा है? So these are the entire mechanism. Means if I'm doing like this, I'm creating a circuit. When you are doing a meditation, you are asked to sit in a posture where your legs are crossed and then your hands are kept like this or in the mudra. What are all this? These are also creating the circuit, especially when you are sitting in a meditative posture. If you look at it carefully, it creates an infinite pool. So what happens to the energy is the energy is not let out, the energy is preserved in the body. When the energy is preserved in the body, आपका जो हमेशा क्या होता है कि आपकी जो ऊर्जा है ऊपर से नीचे की तरफ जाती है. It goes from the higher to the lower. But when you are meditating, what happens? You are not allowing the energy to go out. What it happens? It starts sedimenting at a place. जैसे, let's say I open the tap and the water is flowing. But if I keep a bucket, the water is getting deposited. So when I'm doing a meditation, I'm sitting in this posture. What is happening now? The energy, instead of flowing out, is getting deposited. And when the bucket is filling up, what happens? You will also understand that if I throw water, the water will come from up to down. But here in the bucket, what is happening? Is the energy going down or the water is rising up? That means it is working in the reverse direction, is it not? If I should throw something, it should fall. But here in the case of the bucket, it is rising. How? Because it is filling up. In that similar case, jab aapki urja, when the energy is passing through the head to the toe and going off, now you are stopping that as a bucket. Now the energy is getting accumulated and slowly, instead the energy going down, the energy slowly goes up, 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 up. What happens? Then the chakras through which the energy was just flowing down is now activating it in a reverse fashion. It is moving faster, just like a windmill. Now, when that is rotating in a faster way, that energy is rotating that energy in a faster way, will it be more activated or not? And when it is more activated, are you gaining the power of those chakras or not? It makes so simple way of understanding it. And absolutely, yes, Karthike, because those energy are empowering not just your physical body, but your ethereal body as well. So when the ethereal body is getting more activated, at times you sit, you close your eyes and you feel like you are floating. That's the reason. So Chidvilas, mudra. Yes, Guru. Understood. Yes, Guru. So everything has a science behind that, and everything can be made understood in a simplified way. There is no complexity in that. And I believe like now you will not forget that. Yeah. Given you enough. Okay. So any other question? Yes, Guru. Actually, I have a lot of questions, but I'll ask few of them. कोई बात नहीं, सब बड़े खुश हैं. They are so happy. ऐसे अच्छा तू ही पूछता रहे, हम सुनते रहेंगे. Yes, Guruji. So, so sometimes it so happens that like nowadays usually it happens that when I'm sitting like simply sitting, and then
I go through something inside me. I don't know what I'm going through. Okay, okay. Chidvilas, can I just hold on? I like the way you said when I'm just simply sitting, right? This is such an amazing thing. We never understand that. That means sometimes we sit simply, other times we are sitting complexly, right? That's good. हम इतने कॉम्प्लेक्सिटी में बैठते हैं कि कभी कभी सिंपल बैठ जाते हैं. चलो, okay, when you are sitting simply, then you start. Go ahead. Yes, Guruji. So, consciously, I feel like the outer thing is getting separated somehow. Okay. Like, I literally feel like from internally, logical mind says, like, where am I? What am I doing? Where am I sitting? What is this place? And like, I don't know what's going on. That's craziness. Yes. What's going on? Okay. Like, and then at that particular time, I just feel like, you know, just leaving this body, going out and coming in again. Okay. So Astral travel. like I don't understand like how am I able to do that kind of thing consciously? No, those things can be done consciously only. If you are not doing that consciously, it is called as dream. Yes, Guruji. Like what is happening? I don't understand anything about it. Okay, so your mind need an answer to that. See, you can call it astral travel. You can say, you can call it as the silver cord attached and I'm flying in the air. Or you can say like my aura has been growing so large that I'm not able to keep myself within the body. So I'm feeling the expansion of my body. So I'm feeling as if I'm no more in this body. I'm beyond this body. Then your ethereal body can also be so huge that it starts floating. Means it is no more grounded with the body. It starts floating. Then also you can call it as the chakras are so activated. Now the chakras are moving such a fast that it is creating that energy and the body is being pushed up. All these things can be logically answered for a logical question. But I don't want you to go there. You actually said the answer when you asked the question. You said, what is happening? What are all this? Who am I? What am I doing here? See, these are the real questions. By asking these questions, you know what happened to Ramana Maharshi. That means the one who started getting these kind of questions is destined to find the answers. वो एक तो सामने भी बैठा हुआ है, देख लो. What does that mean? That means it's a really amazing space where you are no more able to connect yourself to these things. आप इस सांसारिक चीजों के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हो. Somehow that detachment is happening. But the question comes, what will happen if I become detached to this world? Who is going to take care? That's the reason I am still in a family. At least you should learn that you can be here and you can there also. नहीं तो हम भी ये कपड़े बदल के और कुछ पहन के और कहीं बैठे होते. So don't worry, you're not going anywhere. However, you can have a much better understanding how everything is working. Let's say you're driving a car. You don't know anything about the driving machinery of the car. Suddenly your car stops. What will you do? It's the mid of a desert. Your car stopped. For miles together, there is no communication, no phone, no water, no food. Your car broke down. What would you do? You don't know to fix the car. Then this is called as you are deserted. You are destined to succumb to the situations of that space. Right? नहीं, कुछ लोग बोले ओला उबर नहीं है क्या? अरे फोन नहीं चल रहा है, मैं बोल रहा हूं पहले. That means, can you understand what, Chidvilas?
In this life, you might come into such a situation when the mechanism of life is not working. And if you don't know how to fix that, you are doomed. So what are these questions? These questions are making you understand the process in a much better way. You are just like becoming a mechanic. Now you are a mechanic, you know each and every part of the machinery. You know how it breaks down, you know how to fix it. Are you doomed? Or you can sail through. It does not matter whether it is mid of a desert or a mid of a road or in front of your home. If the car is not starting, you can fix it, you can start it, go back, drive again. Makes sense? So Yes. similarly, spirituality is not something that breaks down your car, but spirituality is the quality that helps you to understand the mechanism of life and how to fix the mechanism if it breaks down and go ahead. So which one is better? You are having all this question is good or bad? Absolutely good. And let's say you have studied, you have graduated, you have done your postgrads, you have done your PG and diplomas and degrees, whatever you want to do. You did all that. After that, ABCD is a difficult task to write, right? No, pakka? So if you rise in spirituality, your life becomes ABCD. The problems of life that you call. So what should we do? Are And you then actually, or you know your path? like sometimes it happens that like more recently it happened that that state is becoming even more intense, and then I just feel like, why doesn't mukti happen in a snap? Like, why should it take a very long time? Because like time is like it just goes internally, that time It's is just which is created, or like something else. Like, why shouldn't it happen immediately? immediately. Very good. Who said that mukti takes time? Who said? See, mukti happens like this. Preparation takes time. Question is wrong. The question is very simple. Think again. Think again. मुक्ति को समय नहीं लगता, मुक्ति की तैयारी को समय लगता है. खाना खाने में कितना टाइम लगता है तुमको? 5 मिनट में उड़ा देते हो. बनाने के लिए पूछो जिसने बनाया है. So death also, you cannot say like that person waited for 90 years to die. No, death happened in a second. He was alive 90 years. है ना? तो बताओ, मुक्ति को समय लगता है या मुक्ति तक पहुंचने वाला समय क्या बात कर रहे हो आप? Like in that state, I feel like that must happen right away, but it doesn't happen. Like it seems obvious to the logical mind that it doesn't happen like immediately after I experience that. So like, how to manage that thing? Like, I feel that's a good thing, but it is a अच्छा. See, again, let me talk to you in the language that the youngsters understand this. Okay. Let's say whatever you asked for, it appeared in front of you instantaneously. Okay. You just thought of mukti and gone. Mukti ho gayi. But before mukti, you have so many things to take care of, right? Hello. Before mukti, there are so many things to be taken care of. Let's say, so just before, a few seconds before mukti, you know how many thoughts hit your head? More than 62,000 thoughts in a day. A few million neurons are created. Okay, so science tells that, right? Okay, let's say
just before that mukti is about to happen, in a fraction of a second. You see, this also is a micro fraction of a second. In that you thought of an elephant. And the elephant appeared. You are sitting in your home and you are thinking, oh, dinosaurs vanished. How good it would have been if a dinosaur was here. Let's say it appeared. What would you do? You thought, oh my God, I saw that ghost movie. The ghost should not appear here. What if it appears? And the ghost appears. And not only that, I'm not going into the intrinsic part of it. I'm just floating above. क्योंकि हम कई बार ये सोचते मर गया तो अच्छा है, अगर हो गया तो दुनिया आधी खाली हो जाती 2 मिनट के अंदर, क्योंकि सबके मन में किसी ना किसी को मारने की भावना तो है ही है. Everybody thinks of that because that animal instinct has not yet gone. Can you see? It is good that things are taking time. It is the grace of God. He says, think well if you really want this or not. अगर सब कुछ बोलता नहीं, तू बोला ले ले, बोला ले ले, आप जानते हो क्या क्या सोचते रहते हो दिन भर में आप? Do you even know what all you are thinking? If you start thinking what you are thinking throughout the day, you will say, God, your grace, you are not giving it right away. See, it is not delay. That's what I say, no, my favorite one, like 2 words I always use. Delays are not denials. Delays are the preparations. So you decide whether you really want to get into this. Once you have chosen, walk on that path. It will be given to you. So now tell me, if mukti को देर लगता है, तो वो problem है या it's a good thing for us? Because I don't even know. Might be I was thinking about mukti right now, and 2 minutes later, somebody brought a beautiful rasgulla in front of me. I said, oh, I should have eaten that. रह गए ना? So he says, no. Think of, you want to eat rasgulla? Okay, eat rasgulla first. Because after mukti, no rasgulla. Some people, even Chidvilas, ask me how boring that place would be now, what you called as nirvana and mukti. I said, absolutely. तेरे जैसे लोगों के लिए boring ही है. Because you need everything, every 2 minutes, you need some different taste for eyes, ear, nose, mouth. You need something different. So you will be very, very bored because in that space, nothing changes. It's absolute pure bliss. That's it. And some people will be bored, na? There is a particular saying, let's say, in particular religion, it is said like there is a pillar on which you will be made to sit on that. Like you have reached to a certain level और आप उसको उस स्थान के ऊपर आपको बिठा दीजिए. Some people say, oh my God, I will be sitting on a pillar throughout the day, throughout the night. What am I going to do? तो तेरे जैसे लोगों के लिए ही पिलर बनाया गया है ताकि तू डर के मारे वहां जा ही मत. You should never go there out of that fear itself. So that the pillars are not filled. They are still vacated for some people, those who are really very willing to go there. So that's how Chidvilas. It is a good thing that it is not happening like this. Yet it will happen like this. When you went to a shop, you tried many things. Finally, you decided this is the dress that I'm going to take. Then you pay the price for that. In how much time does that dress from that shopkeeper owners becomes yours? कितने समय में होता है? Immediately. You went to a jewelry shop, it was been hanging, that necklace have been hanging for a year there. And now you just went that you selected and you paid the price. Within how much time does that becomes yours? Immediately. But to buy that, how much money you have to earn, and how do you earn that?
क्षण भर में, क्षणिक मात्र में बदल जाएगा. That means the thing that has to happen happens in a fraction of a second, whether it is birth, whether it is death, whether it is liberation. All other things are just preparation. And at the same time, it is a blessing that it is asking you, are you really ready for this? Choose. So, problem है? नहीं है ना? Enjoy. और कुछ है क्वेश्चंस या डब्बा खाली हो गया? I have some logical questions right now. अच्छा So अच्छा, तो like अभी तक क्या इलॉजिकल पूछ रहे थे तुम? ठीक है, लॉजिकल पूछ लो. like illogical for the logical mind. ओके ओके, वाह, ये बढ़िया है. मेरे साथ लोग रह रहे के मेरी जैसे ही बोलने लगे हैं ये सब. ओके, गो अहेड. So like I heard that when there are Pancharatnas which were written by Tyagaraja. So in that it is said that four Pancharatnas are to be said by Guru, Okay. and then the last Pancharatna is not to be said by the Guru. Okay. And if at all, if he says, there are like Gandas going to come up for him. Okay. Like, and then there is even other thing that when Yuddhakanda starts in Mahabharata, like even then the Gandas are gonna come up for that person. Okay. How far is it true, and then how does it apply if it is so? It applies to those people, those who believe in those things. We believe in Shiva. See, it is a very simple answer. But if you want me to do a complete dissection of it, I can do a dissection of it. But that would absolutely, you know what will happen? It will rewire your brain in order to understand, because when you are talking about this, many people didn't understood what you were saying actually. ये किस पांच खंड की बात कर रहा है, फिर वो पांच खंड क्या, ये पांच खंड गुरु बोलना चाहिए, दूसरे पांच खंड वो नहीं बोलना चाहिए, अगर वो पांच खंड बोला तो उसका क्या होगा. सी मेनी पीपल विल गो इनटू ए क्रेज नाउ, दे विल गो गूगल इट, और गूगल महात्मा उनको इतना ज्ञान देगा ये पागल हो जाएंगे. It's a very simple path. See, let's say we traveled to a place called as the Ishtakameshwari Devi. If you ever get a chance, just Google that and watch the video of the way that leads to Ishtakameshwari Devi. It is near Sri Sailam only, okay? I went there. A few of my family members, friends, all went there. When we were going, the driver, it was a Jeep, 4-wheel drive. So he asked for 600 rupees at that time, many years ago. He asked for 600 rupees. I said, how many kilometers? Sir, just 15 kilometers. Are 15 kilometers ke liye 600 rupees tu? You know what he said? He said, sir, you just sit. After coming, you will give me more. Then I was in a dilemma, in a understanding that मैंने बहुत घाटियां चढ़ी हुई है, because in my when I used to go into the I camps also, I have traveled deep into forests, trenches, deep forests, rivers, and all those. Wherever I have not gone, I don't even know. You'll go crazy if you. The only thing that I didn't had at that time was a camera, or else everybody would have enjoyed the picturesque things here. Now I said, I have seen anything. I have gone there. Just sir, बैठो. 1 kilometer. It was just going into the mountain. Oh, this is what it is. Then there was a door. I should write something there, door to hell. You know why? You'll understand why when I say. There is no road. There are only rocks. The driving, the wheel, I say, it is only that Jeep can go. Any other vehicle cannot go there. Because the wheels are not rolling, they are hopping like a grasshopper from here to there. They are jumping.
and we are sitting, and 14 kilometers we have to go like that. We thought like we should get down and walk, it is better. Then in front of us, a jeep goes like this, rotates down, comes down, stands in front of us, nothing happens. People are okay, just shouting, nothing happens. The jeep they have created in that way also, nothing will happen. Just it roll down. Then we went to a place, I said, there is no way. Suddenly he enters into a waterfall and there is a way. And that road, you won't believe. वो कहते हैं कि उनका नाम इष्ट कामेश्वरी देवी क्यों है? It is just like a small little temple of 2 feet. You have to go crawl down like a baby to reach out to the Devi. Okay? And if you touch the forehead of the Devi, you will feel like as if you are touching the forehead of a human. It feels like that. And it is said, whatever you wish for will be granted. What do you think people will ask? Safely reach back home. Absolutely, this is what they asked. They were all going there. अरे वापस पहुंचा दे, इतना काफी है, बाकी कुछ नहीं चाहिए. And literally, they came back, and the moment it hit that वो door cross करते हैं, and they hit the black pitch road, everybody is clapping. I said, wow, what an amazing place. And in the video, if you go search it, there are videos for that place, but it does not speak anything about the experience that you might have there. And in between, you are going into a jungle, some branches will come and cut through your hand and go up. Why? Because those are thorns. So you don't know where, what. Now, why I told all these things? See, we experience all these things because we chose that path. So in that path, those many troubles, turbulences, experiences, issues are there. And there are other paths. If we never decided to go to that temple, even if now, I ask some of my people, it's years now. Even today, just recently I was talking, you remember there? Shall we go? हाथ जोड़ लेते भाई. कहीं पे लेके जा, हिमालय चढ़ा दे, वहां नहीं जाएंगे. What does that mean? That means very simple thing. That path is so difficult that nobody is willing to walk. Similarly, why did we go through that path? Because we chose that particular thing. Soumya ji, you have gone 2 times. Courageous souls, you know. ऐसे ही लोग जिंदा हैं, माँ से आशीर्वाद मांग के आए होंगे, घर पहुंचा दे. So similarly, Chidvilas, if we chose the path to go to Sri Sailam, that road is good, no problem. We went there, we saw the temple, we visited, we did whatever we have to do. But Ishta Kameshwari Devi will never forget. We might have all forgotten the pathway to Sri Sailam, but Ishta Kameshwari Devi path, everybody has a crystal clear image of them. The word you say E, they saw that stones. And that rolling of that jeep in front of us. Many times we thought we are also rolling down. We did not. कुछ नहीं, उनके लिए रेगुलर है, वो आके उठा देते, 4 लोग उठा के उठा, खड़े कर दो, फिर चलेंगे. That means, Chidvilas, why I told all these things. Good that you all laughed. Good. हमारे experience से सीख लो. The thing is, Chidvilas, if you choose that path, you have to go through those things. So when you are asking me about those 5 things that will be told by the teacher, the 5 things will not be told by the teacher, if he tells also these are the things that is going to happen, it is because they choose to walk that path. What did I say? हमारा शिव का रास्ता है भाई, हमारे पास ऐसा नहीं है. What is the reason? You are choosing a different destination altogether. The path changes. Got it?
So what do you want? You want to go through that stony edge, stony path? I will tell you all the details about that. What kind of stones are there? When were they formed? Then we will do a historical study on that. Then we will tell you like, okay, this stone was not from this place. It fell from Akash. So we can do a geographical survey on that as well. Similarly, Chidvilas, in this case, do you want to go on that path? If you really want to go on that path, I will absolutely clearly teach you why that is there also. Simple thing, rules of Ludo does not apply on chess. And the rules of chess does not apply on cricket. As simple as that. What game are you playing? What destination have you chosen? And I know there are some daring souls. After listening to this, they are thinking to go to Istakameshwari Devi temple. Go enjoy. And then actually, my guru has taught all the 5 Pancharatnas, and then I came to know about this later on. Okay. And then I was not like this much known to this area, and then I started fearing so that like my guru doesn't get any, these disturbances. But nothing ever happened to him though. That's okay. It is good. He knows how to come out of that. You see, especially the people, those who deal with energy level change, healing and all those things. See, the people, those who don't know how to come out of that, they will be trapped in that. वो एनर्जी उन्हीं के साथ रह जाएगी. Okay, but some people are real masters. There are still good people around there. It's not like everything blobs or everyone is just like sitting there to tell you a story. No, there are good people. There are really good people, those who know how to get into the Chakravyuha and how to come out of that as well. Okay, so good. What else? Last question, Guruji. I have more, but last question for now. Oh. So, like someday some person asked me, I don't remember who asked me, but we were talking about these things, and then he asked me, like, do you know in which position you are, or maybe in terms of energy, maybe in terms of chakra, maybe in terms of spirituality, whatever, like, have you raised your kundalini, or which chakra are you in? Like, I say, I don't know anything, I'm just into this. And then like, do we have any way to know, or like it's just happening? Okay, so absolutely, there are Kurlinian images. राजन जी के पास है भी, शायद फोटो उठा भी सकते हैं आपको चाहिए तो. और बाकी हमारे पास इतने सारे एनर्जी हीलर्स हैं इस ग्रुप में अभी भी. नाउ दे आर सिटिंग हियर. यू टॉक टू देम, वो दे कैन कैलकुलेट एंड टेल यू व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर इन. वो बिल्कुल बोल सकते हैं आपका स्तर क्या है, आपकी ऊर्जा कैसी है, आप किस स्तर पे खड़े हो. वो सारे चीजें आपको बता सकते हैं, लिख के दे सकते हो आपको. ठीक है. बट oh, I missed something actually. कुछ आ रहा था चला गया, but you would have gotten a very good answer for that actually. चलो, मैं किस स्तर पे हूं, किस स्तर पे नहीं हूं. हाँ, so let me tell you what I was missing out. Have you played that game Cheese and the Mouse, in that drawing the line inside that? Iman was small and I just gave like that drawing was that the cheese was inside and the mouse was outside. So I was showing him, how can you really reach this place easily? He was thinking, I said, you see, don't start from the cheese. Sorry, don't start from the mouse, start from the cheese. The path will show itself. Yes? He did something amazing. He did not enter the maze. He drew a line outside it. I expected it somehow. So when you have expected this, tell me, are you going from the rat way to the cheese way to the rat, or the taking all the way around, not falling into the trap? तो कहाँ पे हो, किस स्तर पे हो, मैं यहाँ हूं या वहां हूं? अगर किसी ने आपको बता भी दिया तो तुम क्या कर लोगे?
यस, जिज्ञासा होती है जानने की, जान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं. देयर आर मेनी मेथड्स टू नो दैट. साइंटिफिकली ऑल्सो अवेलेबल है, स्पिरिचुअली ऑल्सो अवेलेबल है. बट मोर देन दैट, without any instrument, without any kind of measurement. Can you tell me one thing? Is there anything in this world that can measure you? So when nothing can measure you, why do you want to become something measurable when you are immeasurable? फिर से सोचना मैं जो बोला. Whatever I said, think it again. Can you see, in order to, अच्छा, अलादीन का चिराग जानते हो? You don't know Aladdin and the Chirag? You don't know that? The Okay, lamp yeah, of Aladdin. yeah, Okay, the the lamp lamp of box. Aladdin. So you know, like it rubs and it comes out, right? So everybody told you that Aladdin sometime found that Chirag and he rubbed it. And do you know how the jinn went inside the lamp first? Has anybody told you the previous story? Prenatal story, मतलब बच्चा पैदा होने से वाली पहले की कहानी किसी ने बताया आपको? नहीं बताया ना, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, मैं बताता हूँ आपको. तो बोले कैसे? नहीं, हमने ही चिराग में बंद किया था. So you know what you have to do, if you really want to control that, okay, उसको अगर आप control करना चाहते हो, that spirit, that genie, what you call it, the simplest way to control it, challenge it. What kind of challenge? कि you are so big, you cannot come into this small place. Ach. You are so big, you cannot enter this small thing. Can you accept the challenge and become so small that you are entering it? क्या करेगा वो? It will accept the challenge. It will become smaller, and the moment it goes inside it, cap band. We close the cap. Genie andar. How are you trapped in this world? You are also a spirit. Yeah. How are you in this world? Same. That big thing, how did you become this 5 feet, 6 feet? How even you entered into the womb of the mother? How are you stuck in this body? Lid बंद कर दिया गया है. That lid is called as aham, ego. But are you really 5 feet? Are you really 6 feet? Are you really 2.5 feet? Are you really that baby? What are you? The only thing is you are packed in a box. And as you remember, Chidvilas, in US, jails are called as cells. Right? What is your body made of? Cells. Who is living inside it? तुम ही बंदे पड़े हो. That's why cells. Are you really this? So how come that immeasurable has become measurable now? And tell him, anytime anyone asks you this question, tell them, I have become that there is no scale to measure me anymore. मुझे नाप सके ऐसी कोई औजार बाकी नहीं है. I have become that. Now, when I'm saying this and you're listening to this, tell me what is happening. Is it your truth or not? Absolutely. That means
somehow somewhere deep down within us, हमको ये पता है लेकिन हम एक्टिंग करते हैं। फिर ऐसे सर के ऊपर हाथ रख के, बिजनेस अच्छा चला, बिजनेस अच्छा नहीं चला, घर में खाना अच्छा पका, नमक था नहीं था, रोटी जल गया, ऑफिस में प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी खराब हो गया, नया गाड़ी आ गया, वो खराब हो गया, वो पुराना हो गया, ये नया हो गया, कपड़े नए ला लिए, वो फट गया। जीवन भर यही करते रहते हो, बट आर यू दैट? नहीं ना। हु आर यू? Genie in a bottle. God in a body. And then recently it so even happened that I sit down and start thinking, how is mind differentiating what is good and what is bad? Mm-hmm. Like as you said, like my prana became like balanced and all, and then it's getting even more intense. Like each Okay. particular thing I take, and then I'm not able to like differentiate it. Only my logical mind is differentiating ki this is this and this is that, Yeah. but essentially like I'm not able to differentiate what is what. Mm-hmm. Like whatever I'm seeing, whatever I'm hearing, like whatever. Right. Okay. So it is But happening that way. okay. So what is the problem with that? No, like I just wanted to say that like तुम्हारा it's हालत getting जनक more जैसा intense. है, नहीं ये सच या वो सच? Is this true or that true? What I am seeing is true or what I am not seeing is true? See, understanding it in a simpler way. There is a greater part of you which is seeing through things. Mm, And there is one part of you that is seeing two things. mm. Did you get my statements? मैंने कहा ना कि मेरे जैसे बात करते करते तुम भी वैसे ही होगे. There is one part of you that see through things, and there is one part of you that sees two things. Yeah. The one who is beyond the realm of 2D, 3D, 4D dimensions, that can see through it. And with this duality eyes, we only see two things, good or bad. Can you say it is not so good, not so bad? नहीं, या तो गुड है या तो बैड है. नॉट सो गुड क्या होता है? नहीं, माई हेल्थ इज नॉट सो गुड टुडे. अच्छा, दैट मीन्स इट्स बैड. नहीं, माई हेल्थ इज नॉट सो बैड टुडे. अच्छा, कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू यस्टरडे. बट वेयर इज यस्टरडे? Can you bring that comparison and show me? No, that means you are talking something again from the air. So, there is one part of you who is able to see beyond certain limitations of the physical eyes. That's your higher self that we speak of. Then there is one part of you that is a logical mind that is required so that you are living and surviving in this world. Logical mind is required. Let's say I'm cooking, and in my cooking, I don't know, I put my hand on the fire, instead of the roti, I am doing this. What will happen? So is the logical mind being there in your body good or bad? No, it is just keeping me as what I am. But at the same time, I will utilize this and yet be free from that. Just like when I need a knife to cut an apple, I take the knife and cut the apple. वो चाकू लेके नहीं घूमता हर जगह पे. Utilization of resources, utilization of the body, utilization of the mind, utilization of the logic, utilization of the emotions, all that has been given to you as a mechanism. Use the mechanism whenever required. All the other time, let it be in the basket, let it be in the drawer. How does it matter? It does not need me. I don't need it. It's a logical mind. Whenever needed, use it. भगवान ने दिया है ना,
पूरा इस्तेमाल करो उसका, जितना कर सकते हो। ओके, बट फॉर द वर्ल्ड एंड द हार्ट फॉर द डिवाइन। पैकेट नहीं बदलना चाहिए, ठीक है? लगाने वाला खाने वाला। What you have to put on the skin, put on the skin. What you have to eat, eat it. As simple as that. Okay, Chidvilas, you got it? Yes, Guruji. Okay. So by looking at your face, I believe like I have answered you well. Yes, Guruji. Awesome. Thank you. Thank you, Guruji. Thank you so much. हाथ जोड़ लिया ना, एनर्जी ले लिया और क्या। चलो, कमलेंद्र जी, प्लीज अनम्यूट। जस्ट अ सेकंड, लेट मी हेल्प अगेन। हाँ, एक बार अनम्यूट कीजिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम कमलेंद्र जी। गुरुदेव, एक जो लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, चिदम्बरम मंत्र पढ़ते हैं जब, तो मेरे को हाफ डार्क हाफ ब्राइट वो हो जाता है, लेकिन लेफ्ट साइड मेरा डार्क रहता है, राइट साइड हमेशा ब्राइट रहता है। ओके। एंड सेकेंडली, ये जो एक काफी टाइम पहले मैंने आपको बताया था, खप्पर वाला जो आपने बोला था उसका वो करना होगा, वो फिर से शुरू हो गया है। ओके। देवी स्वरूप को आना फिर से शुरू हो गया है। बीच में बिल्कुल बंद हो गया था, अभी ये मतलब पिछले कुछ दिनों से फिर से वो दिखाना शुरू किया है उसने अपना रूप। ओके। चलो बता देते हैं थोड़ा उसके लिए, व्हाई द राइट साइड इज वाइट एंड व्हाई द लेफ्ट साइड इज डार्क। हाँ वैसे भी ईड़ा पिंगला देख लो, वन इज हाँ। नाइट वन इज डे। सेकंड थिंग, कर्पूर गौरम काली अवतारम, वन इज वाइट वन इज डार्क। तो उसमें कोई नहीं है, लेफ्ट साइड इज द फेमिनाइन एनर्जी, दैट फेमिनाइन एनर्जी इट विल बी इन दैट कलर, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके ओके, कमिंग टू या व्हाट इज हैपनिंग नाउ। बस जो पहले दिखती थी ना, काली स्वरूप है पूरी, वो पूरा वो सब लेके है, हाथ में वो भी है, सब ब्लड वगैरह वाला मामला पूरा है, लेकिन यहाँ जो है ना ये पूरा वाइट और उसमें है ना रेड में बना हुआ पूरा तिलक जो है। ओके, चलो वो तो ठीक है, लेकिन उसमें आपको कुछ मतलब नहीं, एक्चुअली पता नहीं, या तो ये कह लीजिए वो मेरे को बहुत प्रभावित भी करती है और अच्छी भी लगती है वो उस स्वरूप में, तो इसलिए हो सकता है बार बार वो बीच में आ रही है। ओके। और मतलब अब कई बारी, जैसे बीच में एक पीरियड आया था कि बिल्कुल वो बंद हो गया था, जैसे जब भी मेडिटेशन करता था तो उस पीरियड में वो नहीं आ रही थी, लेकिन पीछे कुछ एक दिनों से फिर से उनका मतलब वही स्वरूप फिर से आना शुरू हो गया। चलो, देयर इज ए ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर दिस आल्सो। जी। और गुरुदेव, मैं एक है ना और है मेरा प्रश्न। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें एक लाइन आई है, शमशान पूर्ण जागृत स्वरूप में था। अब ये मेरे को लाइन समझ में नहीं आई, शमशान पूर्ण जागृत स्वरूप क्या होता है? हाँ, ये कौन सा किताब पढ़ने लगे हो भाई आप? ये है वो एक किसी की विजिट है, अघोरियों से मुलाकात, उस तरीके की है। ओके, जब संपूर्ण स्मशान जागरण किया जाता है, एक तरीके से वो काली कुल की जो शक्ति है उसको जागृत करना कहा जाता है, और जब संपूर्ण ये को जागृत करते हो तो उस स्थान पे रहने वाले हर एक ऊर्जा को जागृत एक ही समय पे किया जाता है। इट इज जस्ट लाइक दिस कि आप किसी के घर जाते हो, बेल बजाते हो और कहते हो कि ये व्यक्ति हैं क्या, तो वो बाहर आते हैं, लेकिन आप जाके बेल बजाते हो तो सारे बाहर आओ। ओके। जब ये संपूर्ण स्मशान जागृत किया जाता है, मतलब
I always keep my mouth shut when I speak of this. देखिए उसको, इसका देयर इज अ टर्म फॉर दैट ऑल्सो, लेकिन आप जिस लैंग्वेज में उससे बात करते हो तंत्र में उसको और एक लैंग्वेज में बोला जाता है उसको, लेकिन उसमें सारे शक्तियों को एक ही बार अवेकनिंग किया जाता है। बहुत डेंजरस हो जाता है उस समय पे, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज अ वेरी टिपिकल वे ऑफ रिएक्टिंग टू दैट सर्टेन थिंग्स। लेकिन करते हैं, किया जा सकता है और करते भी हैं। उसका कारण यह है कि जब मैंने ये एक सारे चीजों को, I have handled all this and I have become a master of all the small things all together. Now one fine day, I will awake everything together to find out whether I have got that energy to handle all that or not. ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब वो सारे शक्तियां एक ही बार जागृत होती है ना, और इसकी क्षमता नहीं रही, the one who is awakening is does not have that power, ये गया उस दिन, they are gone. Okay. तो वो सारे चीजें मशान साधना में भी आती हैं, जिसमें यू अवेक द डेड। जैसे आपने इजिप्ट में भी पढ़ा होगा ना कि इजिप्शियन लैंग्वेज में देयर इज समथिंग कॉल्ड द डेड बुक ऑफ द डेड्स, वो भी जागृत किया जाता है। एवरीबॉडी मस्ट हैव सीन द मूवी मम्मी, मम्मी। दैट कम्स फ्रॉम देयर हियर द स्टोरीज। करते हैं, बट दैट इज पाथ ऑफ अघोर। साधना में एक पार्ट है वो जागृत किया जाता है, जैसे जिसमें सारे तरीके के शक्तियों को जागृत कर देते। बट पढ़ लो, करो कुछ मत उसके बारे में। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ एक स्टोरी है कि तरीके से पढ़ रहा हूँ मैं उसको, मतलब कोई, लेकिन ये सेंटेंस आया बीच में तो मैंने कहा इसका मीनिंग कुछ होता होगा जी। नहीं नहीं, दैट इज इसलिए अवेकनिंग एवरीथिंग ऑल टुगेदर एट वन गो, ओके। वैसा है। सो उसमें बहुत सारे चीजें आते हैं कमलेंद्र जी। वो ये सारे चीजों का उत्तर देने के लिए आई लाइक, वो कहते हैं ना लालायित हो जाते हैं आंसर देने के लिए, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। My favorite zone kind of thing, kind of stuff we speak of. ठीक है, लेकिन कमलेंद्र जी कभी कभी ये सवाल हमको भी आ जाता है कि हम जब शिव की साधना करने लगते हैं तो ये काली कहाँ से आ गई? क्योंकि हालांकि देखा जाए तो हम ऐसे कुछ पर्टिकुलरली उसकी साधना तो नहीं कर रहे, एक्सेप्ट ड्यूरिंग दशहराज हो गया, या फिर जब भी 4 के 4, अब तो हम चारों के 4 नवरात्र करने लगे हैं जी। शायद उसके वजह से हो सकता है, या फिर जब भी हम किसी भी तरीके की शक्ति की साधना करते हैं तो शायद उसके, अब जैसे कल का बात था, जैसे कल आद्या काली का था, कुछ लोगों ने हमारे साथ जो जाप किया, that is one thing, but there is a typical story that I want to tell you so that everybody becomes aware of this thing also. सारे लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि मुझे कुछ समय पहले ये सवाल पूछा गया था कि आप किस तरफ हो। मतलब किस तरफ, मतलब शिव के तरफ हो या काली की तरफ हो? मैं बोला तुमको क्या लगता है किसके तरफ हो? कभी कभी हंसी छूट जाती है। मैं बोला अच्छा तुम उसमें भेद करते हो, ठीक है, वो भेद के कारण आपको ये दिखता है कि उस तरफ हो। कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा ही ना कि इस तरफ हो या उस तरफ हो। सही बात। बट लेट मी टेल यू दिस आंसर सो दैट एवरी वन ऑफ यू, अगर आपको कल जाके कोई कुछ भी सवाल पूछे, स्पेशली व्हेन पीपल टॉक अबाउट अद्वैत, अद्वैत वेदांत के बारे में जब बात करते हैं तब वहां पे भी ये प्रश्न आता है कि जब सब कुछ अद्वैत है तो ये द्वैत कहां से लेके आते हो तुम? शिव और शक्ति के बारे में कैसे बोल सकते हो? बिकॉज वी स्पीक लॉट अबाउट अद्वैत, क्योंकि अभी जो भी हम करते हैं, हम ब्रह्माष्टमी का मतलब ही अद्वैत है। एब्सोल्युटली। बट एट द सेम टाइम वी आर डूइंग सो मेनी साधना। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस साधना? ये सवाल तो सबको आया होगा कि कितनी साधनाएं करनी है, इसकी भी उसकी भी सबकी, क्यों करना है? जब एक को पकड़ लिया तो ये सारी चीजें क्यों? इसका उत्तर देने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ये और किसी और का नहीं है, none other than our what you call him, ओ समय नहीं हुआ क्या, आदि शंकराचार्य। ओके।
आदि शंकराचार्य का जो पहला एक्सपीरियंस था देवी के साथ, ये उस समय की बात है। बिकॉज आदि शंकराचार्य वॉज एन एविड अद्वैत, एविड मतलब हम जानते हैं मंडन मिश्रा के पास जब जाके उन्होंने शास्त्रार्थ किया, उसको किस तरीके से हराया, बिल्कुल, क्योंकि वो अद्वैत के बारे में ही बात कर रहे थे। अद्वैत मतलब ही सेड देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एनर्जी, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज गॉडेस, देयर इज ओनली वन थिंग, निराकार ब्रह्म ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये करते करते, क्योंकि आपने अघोर वाली बात की, वहां से मुझे ध्यान आया। एक बार आदि शंकराचार्य जाते हैं एक अघोरियों के स्थान पे, लाइक ही गोज टू ए प्लेस वेयर aghoris reside. They have been into deep practices. They were not just called aghoris, but they were aghoris. Then Adi Shankaracharya goes and he says that this is all waste. Why are you doing all this thing and all that? And he started doing the tark on that. They listen to that because aghoris don't get angry so easily. They listen to that, but somewhere he crossed the limit. He said like बकवास चीजें हैं, ये सब कुछ नहीं होता है। Now just think of Adi Shankaracharya telling, and वो किस हद पे बात करे होंगे, like what extent he must have taken the talks. Then the main aghori of those, वो अखाड़े का जो मुख्य था, he said whatever you said is okay, but if my sadhana is not wrong and I am right in my sadhana, और मेरी साधना में अगर शक्ति है, I curse you, you will fall into a deep health issue which you cannot recover. तुम्हारा ऐसा तबीयत खराब होगा तो उठ नहीं पाओगे। शास्त्रार्थ क्या करोगे उसके बाद, तो उठ ही नहीं पाएगा, cannot get out from this body. और कमलेंद्र जी 2 दिन के अंदर happened. Only within 2 days, Adi Shankaracharya fell on bed. To the extent he cannot move. He cannot go anywhere, not even to take a bath in the Ganges. गंगा में नहाने तक जाने का छोड़ दीजिए, हाथ में, even not to take a glass of water and drink, he didn't have that kind of energy. He didn't knew what happened over that 2 days. But those who know the entire story know what must have happened. Now one fine day, Shankaracharya, there is no one to help around. Nobody even knows that he is in such condition. That's the curse. Finally, out of thirst, he was crawling towards Ganga. He could not move, he could not walk, he was crawling literally. He was crawling his body and going to the river Ganga, and finally just the river is nearby and he fell there. उतनी भी शक्ति नहीं रही कि उठ के जा सके, चल सके, या तो even to just crawl he didn't have any more energy left. He just fell there. The moment he fell there, suddenly a lady came from behind. And when the lady came from behind, she asked, "Oh Brahman, please move, I have to go. मुझे रास्ता दे दे, मुझे जाना है. I have to go to the other side. Can you please move from the way?" Adi Shankaracharya was not even able to turn his head and look towards him. He just said, "I am too weak to even move. You jump over me and go." Then that lady said, "How can I jump over you? You are an avid Brahmin. आप एक दिव्य आत्मा लगते हो, आपके ऊपर मैं कैसे कूद के जाऊं? I cannot go. You have to move." आदि शंकराचार्य कहते हैं, देवी, मेरे पास इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं अपने आप को उठा सकूं. I don't even have enough energy to move. And in that moment, that lady starts laughing. She laughed and said, "But you only said there is no energy. तूने ही यही कहा था कि कोई शक्ति नहीं है,
अब तू बोल रहा है कि तुझ में शक्ति नहीं है. Initially you said there is no Shakti. Now you are saying you don't have Shakti. What does that mean? Which Shakti are you talking about? किस शक्ति का बात कर रहा है तू? किस शक्ति के बारे में बात कर रहा है? Even then he could not turn around and see her. He said, what do you mean? She said, I am that. तू जिस शक्ति के बिना हिल नहीं पाता है वो शक्ति मैं हूं. I am that energy without which you cannot move. I am that energy which is making Shiva lie down on the floor as a corpse and I stand over her. समझ में आ रहा है? मैं वो शक्ति हूं जब शिव भी शव बन के लेट जाए तब मैं उसके ऊपर खड़ी हो जाती हूं. मैं वो शक्ति हूं. I am that energy. And you said there is no energy. Go, move away from my way. I have to go there. दिखा अपनी शक्ति. And then he said, oh ma, I don't have Shakti. Please forgive me. Now I understand that even though this body is Shiva, but the energy is Shakti. Please help me out. And then that lady takes Adi Shankaracharya in her lap and says, now tell me, is there Shakti or not? Is there energy or not? And that very moment, Adi Shankaracharya just folded his hand, and in that moment she vanished. And after that, Adi Shankaracharya got up and wrote the entire thing known as the Saundarya Lahari. Oh. And then he started his practices related to sadhana, that is the Tantra Marga. तब जाके उन्होंने तंत्र मार्ग की साधना शुरू की और तब उनको ये समझ में आया कि सब कुछ अद्वैत तो है, लेकिन उस अद्वैत को चलाने वाली शक्ति जो है वो देवी है. Can you see, when you see the image when Shiva is lying down and Kali is standing over her, what does that indicate? That it is saying that when I am different from Shiva, Shiva lies down as a dead corpse and I stand over it. And when we are together, we are one, working as one thing. No, जब आप अद्वैत की बात करोगे तो वहां शिव नहीं है, शक्ति नहीं है. लेकिन जब आप द्वैत की बात करोगे तो शिव भी है और शक्ति भी. तो आप किस तरफ हो? Which side are you? किसकी साधना करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए? That's where magic lies, Kamlendra ji. And that's where अभी जो हम धनाकर्षण भैरव की पूजा करने जा रहे हैं, can you say which side are we? No, we are not on sides. We are doing all that is required. क्या आप ये कह सकते हो? अच्छा ठीक है, आपका खुद का फैक्ट्री है, so you produce vehicles, right? क्या आप कह सकते हो ये बोल्ट जरूरी नहीं है, ये व्हील जरूरी नहीं है? अरे 4 व्हील की क्या जरूरत है? 2 व्हील से काम चला लेते हैं ना. फिर बाइक में 2 की क्या जरूरत है? 1 से ही काम चला लेते हैं. कौन से साइड हो आप? क्या आप बोल सकते हो कि मेरा जो बाइक चल रहा है वो फ्रंट व्हील और बैक व्हील, आई एम ऑन द साइड ऑफ द बैक व्हील, आई डोंट केयर अबाउट द फ्रंट व्हील, क्योंकि गाड़ी नहीं चलेगा. तो सिमिलरली अभी एक चीज बता देना चाहता हूं. डिड यू गॉट द एसेंस ऑफ द स्टोरी दैट आई सेड? अगर वो एसेंस समझ में आ गया, then there will be no question related to any puja that we do, because we don't know what energy is needed for what reason. Absolutely. और उसी तरीके से जब हम अभी धनाकर्षण भैरव की साधना करने जा रहे हैं,
I know some people were terrified by listening that 21 दिन की साधना कब करेंगे. For them, we are going to come again this Sunday and only give the 11 day sadhana. अगर आप 21 दिन की नहीं कर पाए तो 11 दिन के कर लो. And still there is a chance for some people to join it. अगर जुड़ना चाहे तो I will talk about that anyways on Sunday. So please invite anybody that you want. Just allow them to sit there and understand what the process we are going to do. उसके बारे में कैसे भी बात करूंगा उसको. Apart from the regular satsang, I will be talking about that also. Okay. So Kamlendra ji, coming back to you. Yeah. अब बताइए, खप्पर पूजा जब वो सामने आती है वो खप्पर पे चमक लगा के, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बता रही है. मुझे तो लगता है आपको भी कुछ लिख ही देना चाहिए उसके ऊपर. मैं क्या लिखूं गुरुदेव. मैं तो एक्चुअली एक तो या तो होता ना, जैसे किसी एक पर्टिकुलर चित्र से आपको लगाव हो चुका होता है. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्योंकि उसके अलावा कोई और दूसरा स्वरूप कभी मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ. वेरी गुड. देखो, जब सारी दुनिया को दुनिया से लगाव है, आपको दुनिया बनाने वाले से लगाव है, तो बेटर कौन सा है? नहीं तो खैर. So undoubtedly, if that particular image is appearing again and again, that's good ना. वो आपके साधना का बल होगा कि आपको उस रूप में वो सामने प्रकट हो रही है. So let her come ना. वो मुझे तो एक ही चीज पता है कमलेंद्र, तू किसी भी रूप में आ. बस ये याद रहना चाहिए मुझे कि तू है. I should not forget that part. I should always remember it is you. That's it. Okay. चलो कमलेंद्र जी, कीप ऑन विथ दैट. और जैसे मैंने कहा, लिखने की कोशिश जरूर करना जी. क्योंकि आपका राइटअप अच्छा है. और इस चीज को अगर आप शब्दों में लिखोगे तो शायद, आप सोचो, आदि शंकराचार्य ने ललिता के बारे में जब लिखा, त्रिपुर सुंदरी के बारे में जब लिखा, उसको पढ़ के हम अभी जान पाते हैं कि वो कैसे दिखते थे. If she has to come, how she would look like. That means that became a reference point. That means मैं इसीलिए कहता हूं कि जब भी कुछ होता है तो लिखो, शेयर करो. The reason is, if I write it down, it becomes a reference point for somebody else. जिसको उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको कम से कम पता तो चले कि ऐसा होना चाहिए. And then they will start their path. Then they will walk on their path. और उनकी साधना के हिसाब से, उनके देखने के नजरिए के हिसाब से, it will come in front of them. किसी को कृष्ण में चोर दिखाता, किसी में बांसुरी बजाने वाला, तो किसी को परेशान करने वाला दिखाता. It depends on what the character they were playing. आपके सामने आपका देवी या देवता उसी तरीके से आएगा जिस रूप से आपने उसकी आराधना की है. और अगर वो आराधना में उसकी छवि निकल के आती है तो मैं उसके नाम का 4 लाइन लिख दूं, कितना अच्छा होगा. बिल्कुल कोशिश करूंगा गुरुदेव. कोशिश आप करो, लिखा वो देगी. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. धन्यवाद कमलेंद्र जी. धन्यवाद. just a second. Okay. जनेश जी. हाँ गुरुदेव. आवाज आ रही है? चंद्र प्रकाश जी फॉर द मैसेज. हाँ जनेश जी, प्लीज आस्क. गुरुदेव, आज जो आभा दीदी ने बात रखी, हाँ जी, तो मतलब ये मेरा प्रश्न भी नहीं है और कुछ नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है तो वो उससे आगे मुझे कुछ करना चाहिए या जो हो रहा है वहीं पे मैं ये करूं, खाली वो पूछना था और कुछ. ओके, पूछ लीजिए. तो क्या हुआ था, क्या हुआ है? वो जो मंत्र का बात हुआ था, तो अभी तक मेरे काफी अलग अलग मंत्रों में, मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं आज अभी अभी का मैं बात कर रहा हूँ, हुआ है कि
मैं वो मंत्र के अंदर ब्लैंक होता हूँ, और ब्लैंक होते हुए इतना ब्लैंक हो जाता हूँ कि पता ही नहीं लगता। लेकिन गुरुदेव कुछ अरसे बाद वो मंत्र ही मेरे सिस्टम से निकल जाता है, ऐसा क्यों होता है? और कोई दूसरा मंत्र किसी न किसी वजह से दूसरा मंत्र प्रकृति की तरफ से मेरे सामने आ जाता है। ओके तो समझो अभी मेरे पास 3 मंत्र है जो मैं कर ओके रहा हूँ, और तीनों में मैं ब्लाइंड हो रहा हूँ। ओके तो shall I continue or shall I leave it? Then ओके it started that I started ओके leaving the mantra. गॉट इट गॉट इट मैं ब्लाइंड होने लगा, तो मैं बोला कि यार ये मंत्र अपने को नहीं जम रहा है, तो आई यूज्ड टू लीव दैट। आई डिडंट, मतलब ओके हाली वो मंत्र जागृत होता है, लेकिन मैं उसकी जो वो रेगुलरिटी में करता था, आई स्टार्टेड लिविंग सम ऑफ देम। I mean, and this includes some of the Sri Vidya ones, some of the Shiva ones, some of the even ओके नृषि का इसमें जो आपने करवाया था। तो दो चीजें होती है। एक समय यू गो बियॉन्ड द मंत्र, मतलब वो मंत्र से आपको जो उपलब्धियां होने वाली थी वो हो गई और आप उसके परे चले गए। बट दैट जनरली डज नॉट हैपन विथ पीपल लाइक अस। यहाँ पे जो हम संसार में हैं, तो जनरली मंत्र का संपूर्ण प्रभाव हमको मिल जाए, उसके परे हम चले जाए, उतनी साधना तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि इट इज इनफाइनाइट। Yes. द पावर ऑफ ए मंत्र इज इनफाइनाइट। लेकिन आपने जैसे सब ये पूछा कि व्हेन आई एम जस्ट सिटिंग एंड आई एम चैंटिंग द मंत्र एंड लेट्स से I had a gap and I don't know what happened, and after that when I wake up I see another mantra going on. No, there is no other mantra going on. Okay वही मंत्र, लेकिन वो मंत्र के अंदर समझो आई एम चैंटिंग, एंड बीच में वो मंत्र और मैं ब्लैंक हो जाते, okay और जब मैं वापस आता हूँ तो वो मंत्र वापस चालू है। okay This is not happening only with mantra, Gurudev. I was doing Durga Saptashati, so it happened that when I used to do regularly, it happened in one day कि सेकंड अध्याय, थर्ड अध्याय, फोर्थ अध्याय, कभी ना कभी कोई अध्याय में मैं अध्याय पढ़ रहा हूँ और धीरे धीरे आई एम जस्ट गेटिंग ब्लाइंड। okay पढ़ते पढ़ते मैं ब्लाइंड हो रहा हूँ। मतलब जो दुर्गा सप्तशती मैं 20 या 25 मिनट में बीज मंत्र पढ़ रहा था, 5-10 मिनट के बाद मेरा वो हाल होता है कि मैं 1 घंटा तक वो दुर्गा शक्ति में वहीं अटका हुआ हूँ। okay तब क्या और करते हो? फिर देन आई सडनली रियलाइज कि अरे पढ़ना है आगे, यहाँ मत रुक, एंड देन आई स्टार्ट। ऐसा करते करते कभी कभी घंटा हो जाता है कुछ भी, तो साला मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। Okay, there is nothing to be confused in that, Janesh जी। कभी कभी क्या होता है कि in our mind, you see the attention span of a mind that we call as, right, it has becoming smaller and smaller day by day. दूसरा हो जाता है कि it gets bored very easily. The mind, I'm talking about the mind, I'm not talking about anything else. First and foremost thing, you have to understand the mechanism of that. So here the mechanism of the mind says like, अरे यार कितना दिन उतना ही पढ़ता रहेगा, तो क्या करता है, leave it somehow. लेकिन उस स्थान पे एक ही चीज कार्यरत करना है आपको। जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा, ask a very simple question, why I started this mantra. First thing, if I started this mantra, have I achieved what it was intended for? Yes, छोड़ दो, no problem. Let's say there is a Hanuman Chalisa that I will be reading, but in Hanuman Chalisa I just wanted one thing and it has happened, then I have stopped it, because जो मैं कार्य के लिए उसको शुरू किया था वो हो गया है, तो छोड़ दो। ऐसे कई सारे मंत्र हैं जब हम आपको कहते हैं कि सिर्फ एक ही दिन के लिए पढ़ो, 4 दिन के लिए पढ़ो, 10 दिन के लिए पढ़ो, उसके बाद छोड़ दो, ये किए हैं नहीं किए हम, because for that period that mantra is needed, you did that, you got out of it. But ऐसे कई सारे मंत्र हैं जो रोजाना कर सकते हो, because in Hanuman Chalisa it is not only related to one thing, it is related to so many things. दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हो, दुर्गा सप्तशती में अगर आप देखोगे पूरा संपूर्ण चंडी पाठ है उसमें। अगर सप्तशती को पूरा सही तरीके से पढ़ते हो तो उसके अंदर आपकी सारी साधनाएं हो जाएंगी, देवी की जितनी भी साधनाएं,
और उसके हाँ अंदर गूढ़ साधनाएं भी है जिसको मना भी किया गया है कि इसको बाहर नहीं उजागर करो। सही वो है। सारी चीजें हैं उसमें। उसी के अंदर चंडी की साधना है, उसी के अंदर 10 महाविद्याओं की साधना है, उसी में दुर्गा काली, जितने महाविद्याओं के साथ साथ जितने भी देवी का नाम है वो सारे जुड़ जाएंगे उसमें अंदर। लेकिन गुरुदेव मैं तो पढ़ता हूँ वो बीज मंत्र वाली, शिव बीज मंत्र वाली साधना, ओके बीज मंत्रात्मक साधना जो है दुर्गा सप्तशती वो वाली, वो पूरे मंत्र वाली, वो जो 2.5 घंटे वाली है वो नहीं। ओके ठीक है, लेकिन बीज मंत्र जो है उसमें पूरे संपुट को पढ़ो एक बार आप, तब भी आपको देखेगा किसी ना किसी रूप में देवी का उधर भी व्याख्या है। हाँ ओके है ना। तो एक ही चीज, वेन एवर यू आर डूइंग ए मंत्र, मैंने जैसे पूछा, लाइक यू जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, व्हाई आई स्टार्टेड दिस साधना। अगर ये साधना मैंने शुरू की कि जिस कारण से शुरू की थी, क्या वो साधना संपूर्ण हो चुकी है मेरी, या तो मैं मैं तो जितने दिन का अनुष्ठान लिया था वो अनुष्ठान संपूर्ण हो गया, मैं पुरुषचरण कर देता हूं, समाप्त? नहीं, गुरु ऐसे कोई भी कारण से मैंने मंत्र को नहीं लिया, मैं बस मंत्र को कोई ऐसे ही जाप करता रहा। नहीं, मैं सिर्फ वो समर्पण के लिए बस, ओके वो देवता के समर्पण में और उसके उसमें ही करता हूँ, ओके, कुछ मेरे को चाहिए नहीं। उसके लिए भी बड़ा सिंपल आंसर है, क्या मेरा समर्पण संपूर्ण हो गया? हाँ गुरुदेव, मैं आज एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जो मुझसे छूटा है, जिस जिस जिसके अंदर मेरा मन पूरी तरह से स्थापित नहीं है। और कई मंत्र ऐसे कभी कभी कुछ करते करते वापस जागृत होते हैं और चलते जाते और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं होता हूँ, लेकिन जैसा दुर्गा दुर्गा द्वादश द्वादश नाम स्तोत्र में पढ़ता था रोज, एक बार या 3 बार या 5 बार डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग, और मैं खुश था। ओके और सडनली ये दुर्गा सप्तशती मेरे सामने आया और द्वादश नाम स्तोत्र निकल गया और दुर्गा सप्तशती चालू हुआ। ओके इसमें खुश था एंड तो सडनली वहां से कोई और शिव का मंत्र आया। ओके आता गुरु से ही है, मतलब ऐसा नहीं और कि मैंने इसे ही पकड़ लिया। ओके, सो वन मोर थिंग जो जनेश जी यहाँ पे देखा जा सकता है कि यस, at times mantras change based on the situation of life। मतलब कि मेरे जीवन के सिचुएशन के हिसाब से मेरी पूजा भी बदल जाती है, मेरी आराधना भी बदल जाती है और मेरे मंत्र भी बदल जाते हैं, ऐसा भी विधि में है। ऐसा हुआ है गुरुदेव, ऐसा ये बात होगा, पक्की है। because that particular 2007 mantra में appears 2007 when से मेरा शिव साधना हुआ शुरू। 2008-9 के अंदर तब तक ओम नमः शिवाय के सिवा कुछ नहीं करता था, और ओम रूम जूम सा, बस ये 2 ही मंत्र थे जो चल रहे थे। उसके बाद 2009 के आसपास ये दुर्गा द्वादशी नाम हो गया। 2012 में 3 साल तक दुर्गा द्वादशी नाम चला। 2012 में उन्हीं गुरु ने बोला अभी ये दुर्गा सप्तशती करो, तो दुर्गा सप्तशती शुरू किया। और फिर दुर्गा सप्तशती चला 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 तो 2015, 16 या 17 तक चला। अब दिक्कत ये हुई 2017 में जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे ले गया, आई वॉज एब्सोल्युटली आउट, एंड व्हेन आई केम टू माय सेंसेस, वो 2007 वाला उम्र जूसा मेरे अंदर चालू था, एंड I could hear it in each and every cell of my body, and I was out. I was out for 8 hours, okay and उस वक्त मेरी आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं था। कि मुझे ही समझ में नहीं आया कि मतलब मैं ऑपरेशन टेबल में से बाहर आ रहा हूँ, 8 घंटे का ऑपरेशन के बाद मेरा सेंसेस आ रहे वापस, and I could hear only that mantra, nothing else. I didn't know where I was, whether I was in an operation theater, in my room. I didn't know anything except that mantra. that's where Janesh ji, these are the testimony of mantras, टेस्टिमनी ऑफ द मंत्रस इन द सेंस कि मंत्र प्रभावकारी हैं, मंत्रों का प्रभाव होता है। देयर इज ए importance of mantras because when such things of happens in your life, even without your knowledge,
You start chanting that and automatically your work starts getting done without any effort from your side. आपके हाथों से कुछ भी नहीं किया जा सकता था. But all these things start happening. What does that mean? कहीं ना कहीं वो तत्व का जो शक्ति है वो आपके साथ चलने लगा है. So Janesh ji, finally we'll come back to the question that you asked is like, at times you have missed out on the mantras. Then if this is the testimony of your life, अगर आपके जीवन में ऐसा घटित हुआ है कि मंत्र बदलते रहे, इसका कारण सिर्फ और सिंपल आंसर इसका ये जनेश जी है कि इसका मतलब आपको समय के हिसाब से, मतलब आपके जीवन में जब भी जो मंत्रों की जरूरत पड़ी है वो मंत्र अपने आप सामने आए हैं. So there is no question to question that also. कुछ सवाल पूछने का ही नहीं है, एक ही बात है, हाथ जोड़ लो, वो तो है लेना, जितना दिन ये मंत्र मेरे साथ चलना है उतने दिन चला ले, उसके बाद मेरे जीवन के लिए जो जरूरी है वो भेज दे. आई डोंट नो. गुरुदेव, ये माँ काली का, आद्या माँ काली का मंत्र पिछले 3-4 सालों से हम कर रहे हैं, बराबर है, हर उनके प्रागट्य दिन पे. क्या नहीं, फिर से बोलिए. कल जो हमने आद्या काली का मंत्र जाप किया वो पिछले 2-3 साल से हम प्रागट्य दिन पे कर रहे हैं. कल मुझे देरी हो गई घर पे आते आते, बाकी सब निपटते और करीबन 12-12:15 हो गए थे और मैंने शुरू किया. गुरुदेव, इतने 3 साल से कर रहा हूँ कुछ नहीं. कल गुरुदेव ऐसा हुआ, each and every cell of my body started turning white and they started rotating inside. And first माला and जैसा second माला आदि हुई ना गुरुदेव, they all settled down and they all became blank. And I could see each and every cell of my body is black and blank. And I'm doing mantra जाप सिर्फ 2 माला में गुरुदेव. तो तब है ना, ये मतलब क्या बोलते, मेरी बुद्धि या साथ नहीं देती या मुझे कंफ्यूजन होता है. फिर मैंने 2 माला करके माँ को पूरा अर्पण कर दिया और सो गए. मैंने उसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन आज अचानक, बिल्कुल सोचा नहीं कुछ नहीं, लेकिन आज अचानक जब आभा दीदी ने ये बात छेड़ी तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे कोई मेरी बुद्धि की वजह से मेरे से कोई गलती होती हो तो मैं मेरे समाधान को भी इस वजह से आपको बता देता हूँ जनेश जी. एक्चुअली जो तिथि जो मैंने कहा कि 11:30 बजे से पहले खत्म करो, वो सुबह 6:30 बजे तक था. क्योंकि मैंने अगर आपको रास्ता दे दिया तो आप रात में भी बैठ जाओगे, इसीलिए मैंने एक अंकुश लगा दिया उसके ऊपर कि यू हैव टू कंप्लीट इट विद इन दिस टाइम. क्योंकि हर एक चौगाड़ा जैसे बदलता है ना, हर एक घड़ी जैसे बदलती है, उसका प्रभाव भी बदलता है. लेकिन क्योंकि आप लोग गृहस्थ हो तो उसको मैंने समय सीमा में बांध दिया, बोला इस सीमा के अंदर खत्म करो, यू हैव टू कंप्लीट इट बाय दिस टाइम. लेकिन जो उस समय में करता है उसको पता है. बट यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीम्स, राइट? हाँ, मेरे को चाहिए भी नहीं था, लेकिन मुझे गलत फहमी ये हो गई कि कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही ना. नहीं, क्योंकि वो समय से लेके ऑलमोस्ट सुबह 5:30 बजे तक मैं भी था. वाह. लेकिन आपका तो संवाद चलता है गुरुदेव, हमारा ये संवाद अभी तक नहीं चला है. That's how it is, but that's good. जैसे भी हुआ, बट अच्छा हुआ. Your experience should speak about that, right? Nothing else. आपकी कृपा है बस, और कुछ नहीं. मतलब गुरु सत्ता की कृपा है. मैं सही में गुरुदेव इतना भाग्यशाली हूँ कि मैं बता नहीं सकता. जस्ट हम एक ही चीज कह सकते हैं, बस करते रहो साधना. और क्या. जब तक वो आके खुद लेके नहीं जाता तब तक साधना, जब वो आ गया तो चले जाएंगे. और क्या. ओके. So thank you Dinesh ji. Thank you each and everyone. I believe like जैसे कई सारे लोग कहते हैं ना कि nowadays the Q&A sessions are just Q&A sessions for name.
because they are no more Q&A sessions. They are satsang in itself. So only thing is, the difference between the Q&A session satsang and the Sunday satsang is, in satsang I come up with a topic. In Q&A, you choose the topic. But I believe all that we discussed today, इतने सारे चीजों के ऊपर हम बात करें, so beautifully everything came out as an answer in such a simple way that it can be told to anyone and everybody would understand that. सहज सरल रुपाय से जो इससे भी समझा जा सकता है, everything was told, right? And absolutely amazing questions, I can say. Logical, illogical, simple, tough, difficult, whatever you said. But what I saw is, in these kind of questionnaires, the answers that we all get, it creates so much of clarity for everyone. Anyone who goes and listens to this, they will get the benefit out of it. So thank you all for your beautiful questions. Because of that, we created something that is going to help. We don't know how long, because till the video is available, people will get to know that. So thank you for your time, for your efforts, for your questions. कुछ भी हो जाए, एक ही चीज लेके चलो, इसी बार खत्म करना है. उससे पहले जितने सवाल है, any questions you have to ask, you ask me, you get it clarified. But this time, no more question after that. Means this life should be the last. Okay? So days are coming shorter and we are coming to meet again. Chandraprakash, dress code, it's navy blue. Navy blue for both male and female. And one more thing, certainly I will give more instructions about Dhanakarshan Bhairav on Sunday. So all the people, those who are practicing, be there. And also there is a chance that we might choose few more. So please invite your friends, whomever you want to. For the Sunday, I will be talking about that elaborately. And apart from that, okay, there is something that has to come. Okay, I might remember that on Sunday, I will tell you. It just skipped right now. That means it's not to come now. दूसरी बात यह है कि your experiences with this, keep a record of all that. यहाँ कमलेंद्र जी अब गुप्त नवरात्र में भी घुसने वाला है बीच. So when all we are going to do the sadhana, like, can you see, Kamlesh, like, there is not even a time that you are not doing sadhana now. But that's how I think, like, जीवन ऐसे ही बन जाना better है. So, but anyways, it will come. We'll see like what can be done for that. Okay. But anyways, we'll be meeting on Sunday. Let us all meet together. And yes, I was saying, like, if we are not even doing sadhana, if we are not even part of it, if possible, do visit on that day to that place. You visit that place because you reaching to that place and experiencing that energy itself is a blessing. जो बैठते हैं तो उनकी बात तो नहीं कर सकते हम, जो वहां जाते हैं उनके बारे में क्या बताएगा. That itself is going to be, you just be there to experience it. That's what we can say. It's already late. Thank you for your patience. Thank you for your time. And thank you again for your beautiful questions. आपके सवालों ने मेरे उत्तर को सुंदर बना दिया. And that's how we can say that. Thank you. See you all again on Sunday. Till then, Aham Brahmasmi Tattvamasi. Keep on with your processes, sadhana, and see you soon. और yes, कई सारे वॉलंटियर्स की भी जरूरत पड़ेगी उस दिन, तो आके कुछ अच्छा काम भी कर लेना उस दिन आके. ठीक है? And anyways, all are invited. And now, Hari bhai, if you are around, please. And if you are not, I have to end the show. Okay? So I believe like Hari bhai is in some function right now. So I will end this. So thank you all again. Meet you soon. Till then,
Aham Brahmasmi. Tattvamasi. Har Har Mahadev.